All right, viewers, our top focus is in Berlin today. The Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Europe. Now, this visit comes at a time when the Russian-Ukraine war has toppled the world order. Prime Minister Modi met with German Chancellor Olaf Scholz and reviewed bilateral ties between the two nations. Earlier, Prime Minister Modi got a rousing welcome from the Indian diaspora in Berlin. People chanted Modi and Vande Mataram. The Prime Minister's interaction began with signing autographs, affectionate pats and obliging young kids. Many kids along with their parents were present at the hotel waving at the Prime Minister's arrival. Prime Minister also interacted with a little girl who presented him with a portrait of his picture and called him her icon. और कहा ना उनको मिलके एनर्जी डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है और वैसा ही था। उनको मिलके ऐसा लगा कि क्या बस उत्साह टू मच था हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, उनके 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। पीएम मोदी ने पूछा कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का पोशाक पहन कर आए हैं, कोई खास बात है क्या, क्यों पहन के? तो मैंने बोला हाँ, हमारी यहाँ पे शिवाजी महाराज जी की परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस है, तो इसलिए परफॉर्मेंस है। तो बोले हाँ, काफी अच्छा दिख रहे हो, कीप इट अप। या पूरा गुजरात बर्लिन में ही है आज तो। बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि ऐसे हमने तो पुणे में गणेशोत्सव में बजा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने बजाने की हमें कभी ये मौका मिलेगा ऐसे लगा नहीं था, पर यहाँ पे आके जर्मनी में आके उनके सामने बजाने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। Let's quickly shift focus right now from the state of Gujarat all the way to Telangana. There's a big face-off brewing at the Osmania University in Hyderabad. All of this after the Congress claimed that the university denied permission to Rahul Gandhi for an interaction with the students. The Youth Congress held a protest against the university vice-chancellor. 18 NSUI workers have been arrested for the protest. Stones were allegedly pelted during the agitation. The Congress claims the university VC has blocked Rahul Gandhi under pressure from the KCR government. The college authorities meanwhile say that no permission was denied to Rahul, but the college political meetings are not allowed on campus. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो पाकिस्तानी है या और कहीं छीने का बॉर्डर नहीं है और प्रोहिबिटेड एरिया भी नहीं है। जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ पर जाकर वहाँ पर देखने के लिए अगर मना किए तो इसको कौन सी तरीका से देखना है? इसका मतलब स्टूडेंट से अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अगर इंटरेक्ट हुए तो केसीआर के जितने भी गलत काम है और नोटिफिकेशंस भी नहीं दिया हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी पूरा खत्म कर चुका है, ये सब सारे चर्चा आएगा तब केसीआर को दिक्कत होगा। इसीलिए चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के ऊपर दबाव डाल के हमारा परमिशन को रिजेक्ट करवाया। BJP strongly condemns the anarchist politics of Congress party. Rahul Gandhi wanting to go to Osmania University is the biggest joke of his trip. He has been given permission to conduct a public rally in Warangal. He should be doing just that. And when the permission is not being granted, they want to anyway go there and disrupt the academic activity. So what kind of politics is this? What kind of a futuristic vision which Rahul Gandhi keeps talking about is this? Meanwhile, a CCTV video of Vignesh, who allegedly died in police custody, has now surfaced in the video. 2 cops can be seen chasing Vignesh. Vignesh then falls, he's beaten, held by the collar and taken away by the cops. Vignesh died on the 19th April after being arrested by police along with his friend Suresh. Vignesh's custodial death has become a huge issue in Tamil Nadu. His brother Vinod has also alleged that the police tried to give him 1 lakh to hush the case. Prabhu, an eyewitness, had earlier claimed that police had stopped and checked Vignesh and Suresh using FaceTag app, which showed Suresh had several cases pending against him. Prabhu claimed that when the cops questioned Vignesh, he handed over a knife he had. He told the police that the knife was to cut grass for the horses he used to give rides along the Marina beach. The eyewitness says that cops allegedly hit Vignesh very badly. Meanwhile, the police's stand is that Vignesh and Suresh caused ruckus and that Vignesh used the knife to attack cops, after which he was arrested. The cops claim Vignesh had a seizure on the 19th morning while eating breakfast and then taken to the hospital where he was declared bought dead, leading to the suspension of a sub-inspector, a constable and a home guard.
நான் வந்து சவாரி இவங்க யாருன்னே தெரியாது. நான் வேற சவாரி போய் ரிட்டர்ன் வந்திருக்கேன் சார். அப்படின்னா பக்கத்துலேயே இவனை என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவன் ஒரு கத்தி வச்சிருந்தான். அந்த கத்தி எடுத்து டேபிளில் வச்சுட்டான், அந்த ஜிப்சி மேலே வச்ச உடனே இது எதுக்குலான்னாங்க. நான் குதிரையை ஓட்டுறவன், குதிரை ஆடுறதுக்கு இதை கட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் அவனை அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னொரு போலீஸ்காரர் வந்தார், அவனை சர மாதிரியே அடிச்சார். அன்றைக்கி நைட்டு 2:50க்கு ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போயிட்டு 3:15 தான் என்னை கீழே இறக்குறாங்க. அவங்க 2 பேரும் லாக்கப்பில் போட்டாங்க. நான் வீட்டில் குளிச்சுட்டு இருந்தேன் மேடம். குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்களை வந்து முதல்ல கதவு தட்டினாங்க. நான் குளிச்சுட்டு வரேன்னும் போது டேய் வெளியே வாடா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மேடம் மிரட்டி எங்களை இட்டு போனாங்க. இட்டுன்னு போய் என்ன மேடம் நான் தவறு பண்ணேன்னு கேட்டதுக்கு ஒரு சின்ன விசாரணை தானே ஒன்றும் இல்லைடா சொல்லி இட்டு போனாங்க. இட்டுன்னு போயிட்டு எங்கள் இன்னொரு தம்பி எங்கே காட்டுன்னு சொன்னாங்க. தேடி பார்த்தாங்க அந்த இன்னொரு தம்பி இல்லை. நேராக என்ன பண்ணாங்க, பட்டினிப்பாங்க ஸ்டேஷனுக்கு இட்டுன்னு போனாங்க. ரஞ்சித்ன்றவர் என் தம்பி வேலை பார்க்குறாருல குதிரை வேலை, அவர் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன் பண்ணி ரஞ்சித்துக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்தமாரி சொல்லு, இந்த இன்ஸ்பெக்டர் மோகன் அவர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு. அவர் ஃபோனில் தான் பண்ணி இந்தமாரி வந்து சொல்லு அப்படின்னு சொல்லவோ அவர் வந்து சொல்கிறாரு என்கிட்ட, ஆனது ஆகிப்போச்சுடா அவன் தம்பி இந்தமாரி இறந்துட்டான், நான் வந்து அதை சாவி எடுக்கிறதுக்கு அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நான் ஒரு பைசா நான் அமௌண்ட்டு கொடுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சி நான் அந்த காசு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். 20,000 ரூபாய் கேட்டேன் மேடம் என் தம்பியை அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு. All these actions are under a platform that evolved called the Joint Action Against Custodial Torture in Tamil Nadu, which evolved as a result of Satyangulam. And I am forced to say that the DMK was also party to that platform. So we are not here fighting against somebody who's an enemy. We are appealing to a government who at one point in time was part of our joint platform. Having said this, the discrepancies that you are asking on the 18th, what has been narrated is blatant, brutal torture with evidence. Now, in midst of rising power crisis in the country, the Home Minister Amit Shah chaired a key meeting at his residence, which the Power Minister R.K. Singh, the Coal Minister Prahlad Joshi also attended. Now, the power cut tussle between the centre and the state in terms of city-state Delhi government continues to grow. In reply to Delhi Power Minister's letter expressing immediate concerns about the low coal stock position, the Union Power Minister R.K. Singh refuted Delhi's claims, saying that the figure in Delhi's minister's letter were incorrect. Singh said that the power situation has sufficient reserve coal stock for 5 to 8 days. Union Minister accused the Delhi government of creating panic by using incorrect figures. Citing an example of October 2021, Singh said that the Delhi government has earlier as well tried creating a panic amongst people over disruption of power, claiming that the gas supply to the plants is being disrupted, which was proven baseless. Singh stressed that advanced gas supply arrangement had not been made by Delhi government and that the Delhi government power department is expected to monitor the contracts tied up in time. देश में 16 राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली के बड़े-बड़े कट लग रहे हैं। कई घंटों के कट लग रहे हैं, कई जगह तो 20-20, 22-22 घंटे बिजली नहीं आ रही है। ये कोई आम आदमी पार्टी शासित पंजाब या आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली की बात नहीं है, देश की बात है। मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर सारी पार्टियों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। All right, meanwhile, remember that controversial seer Yati Narsinghanand, which had once spoken, who had in fact once stoked major controversies over highly bigoted and derogatory speeches. Meanwhile, at a Sanatan Sant Sabha in Uttar Pradesh's Aligarh, the Yati Narsinghanand urged Hindus to produce more children to prevent the country from becoming Hinduless in the coming decades. He went on to say that the Hindu population in the country is decreasing and many are trying to destroy Sanatan Dharma by opposing it. He also urged the Hindus as well as the future generations of Hindus to safeguard their religion. Well, the fact is this is extremely mild in what Narsinghanand usually spews out. Well, he's made controversial headlines. He's been arrested as well for making one of the most bigoted speeches in Haridwar. He was arrested, later released on bail for organizing a Dharm Sansad in Haridwar last year December, where the most provocative, bigoted speeches were made against Muslims. हमारी चिंता है हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या का अनुपात। अगर इसी तरह से हिंदुओं की जनसंख्या का अनुपात घटता रहा तो आपको यहाँ कोई हिंदू का मंदिर मिलेगा ही नहीं। हमने अपने लोगों से कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें।
और अपने बच्चों को अपने परिवार की अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएं। सनातन धर्म धरती से कभी भी खत्म ना हो और जो सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं उनके बारे में हमारे लोग समझे बातों को और अपने आप को बचाएं, अपने अस्तित्व को बचाएं। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार यही तुम्हें बचाने वाले हैं। मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है और साथ ही साथ बच्चे ज्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें। हमारी चिंता है हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या का अनुपात। अगर इसी तरह से हिंदुओं की जनसंख्या का अनुपात घटता रहा तो आपको यहाँ कोई हिंदू का मंदिर मिलेगा ही नहीं। हमने अपने लोगों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को अपने परिवार की अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएं। सनातन धर्म धरती से कभी भी खत्म ना हो और जो सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं उनके बारे में हमारे लोग समझे बातों को और अपने आप को बचाएं, अपने अस्तित्व को बचाएं। All right. Meanwhile, a high voltage drama is expected to unfold in Pakistan as reports are filtering in of Imran Khan to be arrested. The Pakistan Interior Minister has confirmed that former Prime Minister Imran Khan will be arrested in a case related to hooliganism and sloganeering against the Prime Minister Shehbaz Sharif and his delegation. The video clip circulating on social media shows some pilgrims, apparently supporters of Khan, shouting "Chor and Gaddar" as soon as Sharif and other members of his delegation arrived at the Prophet's Mosque in Medina. The Pakistan police have now registered an FIR in the matter against former Prime Minister and PTI Chief Imran Khan, along with 150 others, including former Federal Minister Fawad Chaudhry and Sheikh Rashid, under different sections, including 295A of the Pakistan Penal Code. कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क की मफादात की हिफाजत नहीं करेगा, वो अपने मुल्क को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करेगा। इसलिए मैंने इनको कहा है कि बहुत ज़रूरी है और मैं ये भी आपको कह दूं कि जब भी ये तहकीकात होंगी मैं आपको ये पूरे एतमाद से कहना चाहता हूं कि पता चलेगा किन किन लोगों ने गद्दारी की इस मुल्क के साथ। ये जो इस हुकूमत ने और ये माफिया लेड हुकूमत जिस तरह की इन्होंने शर्मनाक केसेस बनाया हमारे ऊपर, ब्लास्फेमी पे, शर्म आनी चाहिए इनको ऐसे केस बना के। असल में केस बनने चाहिए इन लोगों के ऊपर गद्दारी के। इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उनको वीडियोस के ज़रिए, उनको जाली ऑडियोज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की जाएगी। I'm going to slip into a quick break to stay with me. On the other side is our fact check segment. Welcome back. You're watching our fact check segment where we bust certain claims masquerading to be facts on social media platforms and WhatsApp group. There's a claim suggesting Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says he's unaware of who's running the government. The fact on that, this video is extremely old, from a press conference in December 2021 when the Chief Minister was Mr. Channi from the Congress. With that quick fact check, time for us to go into a break. To stay with me. Updates on the other side. It's also to the point.